everybody, so today we are going to begin with the lesson number 20 of your class 7 English grammar, that is comprehension. Comprehension क्या होता है? Comprehension is to understand. आपको understand करना होता है paragraph. So comprehension suggests understanding. ये क्या suggest करता है? आपको understanding suggest करता है. Comprehension of unseen passages helps to develop a thorough understanding and self-expression. ये क्या बनाता है? आपको develop करता है thorough understanding कि आप अच्छे से समझ जाओ और expression को समझ जाओ. Self-expressions. The following are the important rules to be kept in mind while answering the question as on an unseen passage. कुछ rules है यहाँ पे जो आपको अपने mind में रखना है आंसर करने के लिए. rule like read the passage once carefully and try to get a general idea of the subject it deals with. आपको passage अच्छे से पढ़ना चाहिए, carefully पढ़ना चाहिए, thoroughly पढ़ना चाहिए, उसको general idea निकालना चाहिए subject का जिससे वो deal कर रहा है. Read the passage once again, एक बार फिर से आपको passage पढ़ना चाहिए. This time more thoroughly, इस time अच्छे से पढ़ना है. And make a mental note, एक mental note बनाना है of the details in it. Your answer should be brief. आपका जो आंसर होना चाहिए brief होना चाहिए and as far as possible in your own language. अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए आंसर. While answering question, do not add anything from your own side. आंसर करते हुए क्वेश्चन को आपको अपनी साइड से कुछ भी चीजें ऐड नहीं करनी है. Don't express your personal views unless you are asked to express them. आपको अपने personal views भी express नहीं करने जब तक आपसे पूछा ना गया हो. Fifth, it is possible that you may not be knowing the exact meaning. आपको ये possible भी है कि आपको exact meaning नहीं पता हो कुछ words का. पैसेज में don't be discouraged. आपको discourage नहीं हो रहा है. If you read the passage carefully, अगर आप उस passage को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, आपको meaning मिल जाएगा. आप guess कर लोगे उसका meaning. You can certainly understand the general idea of the passage without knowing the meaning of each and every word. आप certainly general idea समझ सकते हो उस passage का हर word के meaning को समझे बिना भी. So in brief, we can say that while attempting the comprehension passage, the four main points to be kept in mind are. Four main points को आपको mind में रखना है. Your answers are brief. आपके answers brief होने चाहिए. Your answers are to be to the point. आपके answers to the point होने चाहिए. Your answers are as far as possible in your own language. आपके answers अपनी language में होने चाहिए. Use the same tense in answering the question in which they are. आपको same tense use करना है जिसमें वो पूछे गए हैं. So you have to read the paragraph and answer the questions carefully. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.